Hello students, I am Shalini and we will start with another lesson from Footprints Without Feet, and the name of the lesson is The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. Now students, in this video we'll discuss a little bit of the introduction, the key points of the story, and then difficult words, line-wise explanation later half. So let's begin with the small introduction of the story in short, and it goes like this, that the story is about a young and a curious child whose name was Ebright. Now Ebright, he grew up in Reading in Pennsylvania. वो वहाँ पर born up and brought up होते Pennsylvania में. Now his mother would take him on trips, brought telescopes, microscopes, cameras and other materials for learning. उनकी mother उनको बहुत सारी चीज़ें बिगिनिंग ऑफ ईयर्स में ही लाकर देती हैं. इन kindergarten, now when he started his academic years, Ebright started collecting butterflies and rocks, fossils and coins. जैसा कि बच्चों को शौक होता है, वो स्टार्टिंग से ही बचपन में जब kindergarten एज पे थे, उन्होंने ये सब चीज़ों का कलेक्शन स्टार्ट किया था. एंड विल सी दैट वाई ही डिड नॉट प्ले, बिकॉज वहाँ ज़्यादा कुछ उनके साथ खेलने को नहीं था, तो रिचर्ड ने यही चीज़ें स्टार्ट की एज अ हॉबी. Now at the end of the books, readers were invited. Okay, yes. In second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies that found around his hometown. So जब वो second grade में होते हैं तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टाइप के बटरफ्लाइज कलेक्ट करते हैं जो उनके घर के आसपास मिलती थी ना. उनकी मदर ने जब ये देखा कि ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, उनको एक बुक वो गिफ्ट करती हैं, और बुक का नाम होता है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, which told about how monarch butterflies migrate to Central America. So ये जो बुक होती है ये सारी informations देते हैं about butterflies, and to which Ebright found very very interesting, because since his early childhood Ebright was fascinated towards butterflies, और वहीं से उनकी शुरुआत होती है साइंटिस्ट बनने की. Now, at the end of the book, readers were invited to tag butterflies for research by Dr. Frederick Urquhart of the University of Toronto, Canada. जो बुक के पीछे कुछ होती है जो रीडर्स के लिए होती है, तो वहाँ पर इनविटेशन होता है कि कोई भी जो रिसर्च करना चाहते हैं वो टैग कर सकते हैं बटरफ्लाइज को. So as the collecting seasons around reading last 6 weeks, so Ebright next step was to raise flock of butterfly. Now कुछ seasons होते हैं वहाँ पर जो reading areas में थे, तो वो जो butterflies के कुछ seasons होते हैं वो कुछ ही टाइम के लिए होते हैं. तो Ebright क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि एक एक बटरफ्लाई को पकड़ कर टैग करना बड़ा मुश्किल है. सो वो उन्होंने बहुत सारे बटरफ्लाइज के फ्लॉक को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने अपना घर वहीं पर, अपने घर पर ही एज ए जो बेसमेंट होता है वहीं पर उन्हें बटरफ्लाइज को रेज करना शुरू किया, उनकी पोल्ट्री बनानी स्टार्ट की. एंड देन ही जस्ट कलेक्टेड thousands of monarch butterflies in the basement of his house. In 7th grade, his entry was a slice of rock tissue under a microscope in county science fair. जब वो 7th grade में आते हैं तो उनकी जो एंट्री होती है उस ग्रेड में, उस फेयर में, जो काउंटी फेयर साइंस फेयर होता है, उस फेयर में उनको फ्रॉक टिश्यूज़ के बारे में जो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं उसके बारे में थी. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उन्हें वहाँ पर कोई प्राइज़ नहीं मिलता. तो वहाँ वो उन्होंने अपनी हार से एक सबक सीखी. क्या सबक सीखा, क्या लेसन सीखा, उन्हें ये पता चलता है कि अगर उन्हें जीतना है, आगे कुछ अच्छा करना है, तो उन्हें रियल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, और तभी वो आगे जीत सकते हैं कोई भी प्राइजेज या कोई भी पार्टिसिपेशंस लेकर. Now he won later on several prizes for his next project in county and international science, where we'll see when we'll read the story. For 8th grade, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars. This time he won. तो जब वो 8th grade में आते हैं, उनका एक अपना अलग प्रोजेक्ट होता है, और उस प्रोजेक्ट में वो दिखाते हैं कि कैसे वायरल डिजीज से monarch caterpillars ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं. और उस टाइम वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड थ्योरी से और प्रोजेक्ट से वो जीतते हैं, और वो अपना जो प्रोजेक्ट होता है उनको वो प्राइज़ मिलता है.
As a high school junior, he continued his experiment on the monarch pupa. अब वो हाई स्कूल में आते हैं तो उन्होंने अगेन अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करा हुआ होता है और फिर वो जो मोनार्क पुपा पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया होता है उसमें उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलता है इंटरनेशनल साइंस फेयर में, जो कि बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है. Now, in his senior years, Ebright started research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Now, वो जब और 11th या और हायर ग्रेड्स में आते हैं तो उन्होंने फिर एक डिस्कवरी उसी बटरफ्लाई पे, मोनार्क बटरफ्लाई पे स्टार्ट की. और क्या देखते हैं वो, जो उसके शरीर पे, उसके विंग्स पे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, वो किस चीज़ के हैं. तो वो एक अलग डिस्कवरी लेकर आते हैं, थ्योरी लेकर आते हैं, दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द अननोन insect hormone. It is because of the hormone. So Ebright with his college students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for butterflies ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो अब उनके पास चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, एक्सपेरिमेंट डिवाइसेस की प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने लेबोरेटरी की डिवाइसेस यूज़ की होती हैं और अपने ही फ्रेंड के साथ मिलकर उन्होंने एक डिवाइस से हेल्प से उन्होंने ये हार्मोन्स की चीज़ें बताना स्टार्ट की अपने एक्सपेरिमेंट से, दैट गोल्ड स्पॉट्स एक्चुअली इज़ नॉट ओनली फॉर द डेकोरेशन ऑफ दैट विंग, इट हैज़ टू प्ले अ स्मॉल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट. वो जो स्पॉट्स होते हैं वो बटरफ्लाइज की ग्रोथ को डेवलप करने के लिए काम करते हैं. बटरफ्लाई ग्रो होती है, उसमें उन टिश्यूज़ का, उन स्पॉट्स का बहुत बड़ा एक वाइटल रोल होता है. दैट इज़ नॉट ओनली फॉर द डेकोरेशन ऑफ द विंग और ऑफ द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द विंग. Now, next year, his science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarch. Now, Viceroy is again another type of the butterflies. तो वो उस चीज़ के ऊपर उनकी थ्योरी होती है और फिर इस प्रोजेक्ट में अगेन वो जीतते हैं एंड उन्हें जूलॉजिकल डिवीजन में फर्स्ट प्राइज मिलता है एंड थर्ड इन ओवरऑल साइंस फेयर. अगेन ही स्टार्टेड विनिंग द प्राइजेस बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ दिस बटरफ्लाइज. He won third prize for zoology, which also indirectly led to the new theory on life of cells. Now, सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट होती है वो थ्योरी ऑफ सेल्स के लिए होती है. Now, cells are the important and the smallest part in our body. आपने बायो में पढ़ा भी होगा. So, this is actually where he has started his journey as a scientist. He also got the chance to work at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. Now, this was extremely highly designated and most famous institute of the research. और वहाँ उनको काम करने का मौका मिलता है. So, this is how all about the life and early childhood of Mr. Ebright and how he became the scientist. And the journey of the scientist just not began only from one thing. Since kindergarten, from curiosity of catching butterflies, वो एक एक स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, हारते हैं, फिर अगेन उससे अपने हारने से अगेन ही टुक द लेसन एंड देन he again come back with various experiments and started winning prizes. With various experiments, he just come up with the theory of the cells and many other things, and that is how he became a famous scientist. Now, let's have a look on other traits of Ebright. Apart from a good scientist or a famous scientist, उनकी अपनी अलग और qualities भी थी. So, other than science, he is a good champion debater. He was a very good public speaker as well, orator as well, and a good canoeist and all-around outdoor person. So he was a good canoeist and again debater. So उनमें ये सारी qualities और भी थी. He is also an expert photographer. फोटोग्राफी का भी उन्हें बहुत शौक था एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. बेसिकली उनकी जो फोटोग्राफीज होती थी वो अपने नेचर के ही फेवर में रहती थी एंड उनके नेचर को कलेक्ट करते थे अपने फोटोग्राफ्स में. नाउ ही वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन बैड सेंस. कॉम्पिटिटिव एक हेल्दी होता है, एक अनहेल्दी होता है, जिसमें हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या हराने की कोशिश करते हैं. बट एवराइट वॉज सच अ गुड पर्सन दैट ही वॉज अ competitor in a good sense. He did not even wanted anyone else to
look down or to push down to any other level. So उनका competition अपने आप को बेहतर करने में था, अपने आप से competition करने में था. He wanted to be the best for a right reason. So for right reason he wanted to become the best of all. So these are the basic qualities, and curiosity and sharp mind made him the real scientist. Yes, of course, वो starting से ही curious थे. जैसे एक child fascinate होता है butterflies को पकड़ने के लिए, फिर उसके बारे में जानने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. When we are going to study the line-wise explanation, we'll see that how this little curious child have started the journey to become a scientist. And his sharp mind, of course, led him to become a real scientist. So let's start the story. The Making of a Scientist. Richard A. Bright has received the Searle Scholar Award and Scaring Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. So these are the awards which he achieved. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. So we have seen that from a very early childhood उनको butterflies पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, और वहीं से उनके scientist बनने की जो journey होती है वो start होती है. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cell works. Richard A. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. So in first paragraph what we can see that वो 22 years के होते हैं, and उन्हें Scout of the Year का award भी मिल चुका होता है because he was in that Scout and Guide team. और अब वो बहुत ज़्यादा excited है. क्यों एक्साइटेड है ज़्यादा? क्योंकि उनका और उनके रूममेट जो होते हैं कॉलेज के, उनकी जो थ्योरी होती है, थ्योरी कौन सी होती है, दैट हाउ द सेल वर्क्स, वो एक बहुत ही बड़े एंड बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल आर्टिकल जो होता है साइंस जर्नल, उसमें उनका आर्टिकल एंड थ्योरी प्रिंट होती है, पब्लिश्ड होती है. एंड दिस इज़ वेरी वेरी हाईली लाइक एस्टीम्ड नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, जहाँ पर उनकी ये थ्योरी publish होती है, and that is why he is very much excited. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of the college student. No, आज से पहले, उससे पहले कभी किसी कॉलेज स्टूडेंट की थ्योरी कभी पब्लिश नहीं हुई थी, and that was the reason why he was extremely excited. अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में बोले तो स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बोले तो ये एक उसी खुशी को दर्शाती है जो एक छोटा बच्चा 15 ईयर्स ओल्ड के बच्चे के लिए जो बेसबॉल में एक हिट करना होता है बॉल, which is very much like a goal, or which is very much like a sixes in cricket terms. So it was a big achievement for these two little students of 15 years old. So this was all his great achievement in science and other fields. And it all started with butterfly. और ये सारी चीज़ें कहाँ से start होती है? It's all started with butterfly. Let's see. An only child, Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. It's a place there wasn't much I could do here. He said, I certainly could not play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, that is collecting. So वहाँ पर ये जो नॉर्थ ऑफ रीडिंग में पेंसिल्वेनिया जगह है, वहाँ ये जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं, वहाँ ज़्यादा चीज़ें या लोगों के साथ उनका खेलना या मिलना बैठना नहीं था. So he used to spend time alone in collecting the butterflies. So he did, and did he ever, and then he never stopped. Beginning in kindergarten, Bright collected butterflies with same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils and coins. We have seen that. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. So उनका ये जो पर्सनल इंटरेस्ट था बचपन से, वो काफ़ी चीज़ों को कलेक्ट करने में था, क्यूरियस थे, फैसिनेट थे बटरफ्लाइज को पकड़ने में, जो जैसे कि बहुत सारे अदर बच्चे भी होते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट ही यूज्ड टू कलेक्ट रॉक्स, फॉसिल्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, एंड टॉप ऑफ दैट वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी बने, क्योंकि वो आसमान में स्टार्स वगैरह को देखते थे जब रात होती थी. सो बेसिकली उनका दिमाग खेलने से ज़्यादा इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा चलता था. Coming to the next page, from the first he had a driving curiosity along with a bright mind. Yes, of course, he was a bright mind child from early years. He also had a mother who encouraged his interest in learning.
She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipments, and helped in many other ways. So, beside a bright mind, the helping hand beside this little child was his mother. उनकी मदर उनको वेरियस चीज़ें आपने देखा है वो खरीद के देती हैं, सो दैट वो उनका जो क्यूरोसिटी हो वो कम नहीं हो बल्कि ज़्यादा बढ़े. I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring him friends for him, but at night we just did little things together. Richie was my whole life, and after his father died. So his father died, and this mom and son became the closest friend and the best friends together because they did not have anyone until the second grade or third grade. जब तक वो school start नहीं करते, Richard Ebright was the closest person to this mother. She and her son spent almost everything at the dining room table, every evening at the dining room table. If we did not have things to do, I would found work for him. Now you can see that what a like dynamic mother was his mother, Richard Ebright's mother was. वो जब अगर उनके पास कुछ करने को नहीं भी होता था तो रिचर्ड की मॉम उनको काम देते थे. Not only physical work but learning things. This is how his mother developed the skills of learning in the very little and early age of his life. He liked it. He wanted to learn. And learn he did. He earned top grades in school. On everyday things he was just like every other kid. So बाकियों की तरह ही वो एब्राइट भी थे, बट उनमें जो लर्निंग स्किल्स थी, वो क्यूरोसिटी थी, वो उनकी मदर के कारण आई, क्योंकि वो बचपन से ही उनकी मदर ने उनको लर्न करने की हैबिट सिखाई, वेरियस स्किल्स सिखाए, हाउ टू ग्रैस्प द थिंग. By the time he was in second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies that found around him in his hometown. So we have seen that probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. कि शायद मेरा वो collection end था. I have collected several types of butterfly. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X, the book that told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. तो अब तक जब उन्होंने 25 species of butterfly collect कर ली थी तो उन्हें लगा था कि yes, that is the end. बट उसके बाद में ही उनकी मॉम ने जब उनका इंटरेस्ट बटरफ्लाइज कलेक्शन में देखा, देन शी गेव अ बुक and the travels of monarch to his little son, and then begin the journey of the scientist because he was very much interested in collecting butterflies. और अब उन्हें monarch butterflies के बारे में और ज़्यादा चीज़ें पता चली. Now at the end of the book, coming to the next page, we can see at the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick. So, पीछे जैसे I have told you that yes, it was asked to tag the butterflies over here for research, and then Ebright's mother wrote to Dr. Cart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of the monarchs. Anyone who found the tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Ockart. So उनकी जो मदर थे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बात की डॉक्टर ओकार्ट से, लिखा उन्हें, and then they just tagged the butterflies and sent to Mr. Ockart out there. The butterfly collecting seasons around reading last 6 weeks in late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch a very many. So the next day for Ebright was to raise a flock of butterfly. अब चूंकि उनका सीजन्स खत्म होने वाला था बटरफ्लाइज का, तो what Ebright thought that it will be better to raise a flock of butterflies, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद वो बटरफ्लाइज का सीजन खत्म हो जाएगा और ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि वो एक एक बटरफ्लाई को कलेक्ट करें, पकड़ें और फिर टैग करें. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from eggs to caterpillar to pupa to adult butterfly. तो वहीं से फिर उन्होंने एग से एडल्ट बटरफ्लाई तक का पूरा जो लाइफ साइकिल होता है वो स्टार्ट किया. Then he would tag the butterflies' wings and let them go.
For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. So now he just made his home basement as the house of collection of the butterflies. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. ना अब उन्हें अपना इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा था बटरफ्लाइज को टैग करने में. क्यों ख़त्म होता जा रहा था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेडियस इज टायरसम एंड देयर इज नो मच फीडबैक, और ज़्यादा कुछ उन्हें इंटरेस्ट वाली चीज़ उसमें नहीं लग रही थी, बिकॉज ही वॉज डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग. एब्राइट सेड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. So आउट ऑफ इतनी सारी जो बटरफ्लाइज को उन्होंने जो पकड़ा, ओनली 2 बटरफ्लाइज को वो टैग कर पाए और वो वही दोबारा रिकैप्चर हो गई. सो दैट वाज अ लिटिल मोनोटोनस एंड टायरसम वर्क विच एब्राइट थॉट ऑफ. Now coming to the page number 35, we can see that then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of frog tissues, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. So what he thought, जब वो 7th grade में होते हैं, वो उनका जो रियल साइंस वाला काउंटी साइंस फेयर होता है, वहाँ जब वो पार्टिसिपेट करते हैं वो हार जाते हैं. किस चीज़ का प्रोजेक्ट होता है? उन्हें फ्रॉग टिश्यूज दिखाने होते हैं, बट चूंकि वो दिखाते भी हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, बट ही डिड नॉट वॉन एनी प्राइज ओवर देयर. और उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कि हर स्टूडेंट या हर पार्टिसिपेटर्स कुछ ना कुछ जीत के जा रहे हैं, बट एक्सेप्ट हिम. सो ही रियलाइज वन थिंग फ्रॉम हिज मिस्टेक, फ्रॉम हिज फेलियर, that he had to do real experiments. खाली डिस्प्ले करना, नीट डिस्प्ले करना will not be enough. उन्हें रियल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, वो शो करना होगा अगर उन्हें जीतना है कोई कंपटीशन तो. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. Now that is more important, students, that once we are burning from inside, once that ignite comes from us within our soul, that leads to the path, that leads to something else. So same thing happened, that competitive spirit ignites from within the heart of Ebright, and then the journey started. I knew for the next year's fair I would have to do real experiments, he said. The subject I knew most was about the insect work I had been doing in the past several years. So what he thought from his failure कि अगर उन्हें कुछ अच्छा करना है तो उन्हें real experiments करने होंगे. अब चूंकि उन्होंने इतना टाइम एक पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के स्टडी करने में स्पेंड किया है, तो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन टू मूव अहेड. सो ही थॉट दैट येस, इफ ही हैज बीन वर्किंग फॉर अ बटरफ्लाई विल बी द बेस्ट थिंग दैट ही कैन वर्क अपॉन. So he wrote to Dr. Cart for ideas, and back came a stack. Stack is a pile of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high schools and led prize projects in county and international science fair. Since then, when he kept busy himself in experiments which were sent by the Dr. Cart, उन्होंने उसमें इतने determined and dedicate होके involve करते हैं अपने आप को, that he started winning the prizes in all of the international and county science fairs. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars in few years. Ebright thought that the disease might be carried by a beetle. Beetle is again another type of insect. He tried raising caterpillars in the presence of butterfly and butterflies, but then what he thought that yes, जब 8th grade में आते हैं वो, तो एब्राइट को उन्हें कॉज पता चलता है, जैसे what are the reasons, what is the disease that monarch caterpillars क्यों मर जाती हैं, and what he found that it could be because of the beetle. Now he started collecting and raising caterpillars in the presence of beetles. I did not get any real results. उन्हें कुछ results उस टाइम पर नहीं मिलते.
बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट्स. और वो अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते हैं और फिर बाद में वो विन भी करते हैं. The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. Now, what I said that viceroy is again a type of butterfly. और वो अपने प्रोजेक्ट में ये टेस्ट करते हैं कि viceroy butterflies होती हैं वो monarch butterflies को कॉपी करती हैं. और उनकी थ्योरी क्या बताती है? द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉय लुक लाइक वेरी मच लाइक अ monarch butterflies because monarch don't taste good to birds. Now, monarch butterflies birds का ज़्यादा पसंदीदा फूड नहीं है. Viceroy on the other hand do taste goods to the birds. So the more they look like monarch, the less likely they are to become a bird's dinner. तो वो ये पता करते हैं और ये थ्योरी में बताते हैं कि चूंकि वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह थोड़ा थोड़ा दिखते हैं, अगर ज़्यादा दिखेंगे तो वो बच पाएंगे एंड दैट विल नॉट बी द ईटेबल फूड फॉर द बर्ड्स. सो दैट ही थॉट इन दिस थ्योरी व्हाट ही डिस्प्लेड. A bright project was to see whether in fact birds would eat monarch. तो उनका जो प्रोजेक्ट था, क्या प्रोजेक्ट था? दैट वो ये अपने प्रोजेक्ट में बताना चाहते थे कि वेदर ट्रूली बर्ड्स क्या मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती हैं. एंड व्हाट he found that a starling would not eat ordinary birds food. The starling is again a type of bird जो एक ordinary bird food की तरह नहीं खाती. It would eat all monarch it could get. So starling bird are the birds which eat the monarch butterfly. Now, Ebright said later, research by other people showed that viceroys probably did copy the monarch. Now, this project was placed first in zoology division and third overall in the county science fair. तो जो उनका ये प्रोजेक्ट था जो प्रूव करता है कि yes, the starling butterflies, the starling birds and viceroys butterfly copy द मोनार्क बटरफ्लाइज. तो जो उनका ये वाला प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट आता है जूलॉजी डिवीजन में एंड ओवरऑल थर्ड इन द काउंटी साइंस फेयर. सो दिस इज हाउ अगेन ही स्टार्टेड विनिंग द प्रोजेक्ट. Now, in the second years in high school, Richard Ebright began the research that led to the discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on life of cells. And so I told you that he started working on the theory of the life of cells. The questions he tried to answer was simple. What is the purpose of the 29 gold spots on a monarch pupa? So you can see that monarch जो butterfly है या pupa है उसमें gold spots है, उसके पीछे का reasons बताना important है. And that is how and that is what he tried to answer. Everyone assumed that the spots was just normal or ornamental. Ebright said. Dr. Ockart did not believe it. Now, to find the answer, Ebright and other excellent science students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. So, what did Ebright and his team showed? उन लोगों ने एक डिवाइस के थ्रू ये शो किया कि जस्ट वो जो गोल्ड स्पॉट्स है वो खाली ऑर्नामेंटल नहीं है. दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बटरफ्लाइज डेवलपमेंट. This project won first place in the county and again फिर वो जीतते हैं. इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उन्हें प्राइज मिलता है and there he won third place for zoology. He also get a chance to work during the summer at entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. So by this thing and project उन्हें एक बहुत अच्छा golden opportunity मिलती है. Entomology क्या है? Entomology is the scientific study of the insect. So एक बहुत बड़े reputed Walter Reed आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है जहाँ उन्हें काम करने का और एक्सपेरिमेंट्स आगे करने का मौका मिलता है. As a high junior school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. Now अब उनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का होता है, वो हाई ग्रेड लेवल पे वो जाते हैं और वो अब monarch pupa पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं. That year his project won the place at the first place at International Science Fair. Again he won over there and gave him another chance to work in the Army laboratory during summer. So you can see that one by one he have started winning all the prizes in the county science international science fair. In his second year he went a step further.
ना उनका जो लेवल है अब अपने आप को ही वो अपग्रेड कर रहे हैं वन टू नेक्स्ट. पहले बटरफ्लाई, नाउ प्यूपा, नाउ अगेन इन a senior level he went a step further. What is that? He grew cells from monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spot. So that was the gold spot, which is very important. और वही cells grew करेंगे. gold spot plays an important role. How to develop that butterfly's wings? That project won the first place for zoology at the international fair. तो अगेन ये जो उनका हाई लेवल का नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट होता है हॉर्मोन्स का, वो अगेन जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस पे stand करता है. He spent the summer after graduation during further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. So you can see student की पहले उन्होंने आर्मी अगेन रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका मिला. अगेन देन ही जस्ट joined the Army Laboratory during the summer. Again these are the things which he is getting more and more chances to work in different types of laboratory. Then he worked at the laboratory of the US Department of Agriculture, which is again a highly esteemed institute of America out there. So he is making himself more and more better scientist. The following summer, after his freshman year at the Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. फिर वो समर के बाद जब समर नेक्स्ट आता है तो अगेन वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उसी लेबोरेटरी में जाते हैं और फिर उस गोल्ड स्पॉट्स के हार्मोन्स पर उन्होंने अपना वर्क करना शुरू कर दिया. Using laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. Now, because of those highly developed devices out there in that laboratory, with that help of those instruments and sophisticated instrument, उन्होंने आइडेंटिफाई किया. क्या आइडेंटिफाई किया? दैट हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है जो उन्हें पता करना था अबाउट द बटरफ्लाइज. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. So अब उन्हें एक नया आइडिया मिलता है. 1-1.5 साल के काम करने के बाद he got the idea of the new theory. सेल लाइफ के बारे में उन्हें अगेन न्यू थ्योरी क्या आइडिया मिलता है. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन. नाउ ही वॉज स्टार्टेड वर्किंग ऑन द थ्योरी ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन. और फिर उन्हें एक्सरे के थ्रू कुछ और एक न्यू चीज़ें न्यू थ्योरी मिलती है, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहे थे वो. तो ही फाउंड द डिफरेंट थिंग. व्हेन ही सॉ दैट फोटोज, Ebright didn't shout, Eureka, or even have got it. So again he became successful in the next experiment what he was performing on the theory of the cell, that is the chemical structures of the hormone, जिस पर वो बहुत टाइम से काम कर रहे थे. अब उन्हें उसमें again success मिलना start हुआ. But he believed that along with his findings about insects hormones, the photos gave him the answer to one of the biology puzzles. So again उस थ्योरी के साथ साथ एक बायोलॉजिकल पजल्स जो होते हैं उसके भी आंसर्स उन्हें स्टार्ट हुए मिलने. And what was that? That how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA, you all know students, that it is the generic endowment that from one generations to another, right? It is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. So we all have that DNA, that is from our parents we get it, right? So again he found and worked on the DNA of that butterflies, and it determines the form and functions of the cell. So this is how he developed the theory of the cells, life theory of the cell, with that DNA and the chemical structures of the hormones. This DNA is the blueprint for life. So he just designed and he found that DNA of that butterfly is very, very important. Ebright and his college roommate James R. Wrong all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. So with his friend and roommate James R. Wong, he worked on drawing many pictures and models. On models किस चीज़ के बारे में थे? To show how that can happen.
Together, they later wrote the paper that explained the theory. So working day and night, हार्ड वर्किंग के बाद वो और उनके जो फ्रेंड थे उनके थ्रू उन्होंने एक पेपर पे बहुत लंबा नोट लिखा एंड दैट नोट shows the theory of that cell's life and it was a long one. Surprising, no one knew him. So इससे पहले किसी को नहीं पता था. Richard Ebright graduated from Harvard with highest honor. So this was the highest achievement of Richard Ebright जो उन्होंने theory of the life cells की develop की after a very very hard work and long experiments. Second in his class of 1510. So he got the best prize and the most honorable prize in the Harvard University and he stood second and the strength of the class was 1510. Ebright went to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. Then he became a student researcher, not a simple student, he became a researcher in the Harvard School. There he began doing experiments to टेस्ट हिज थ्योरी. अब उन्हें अपनी जो भी थ्योरीज थी उन्हें टेस्ट करने का वहाँ पर चांस मिला एंड ही स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन ऑल द थिंग्स इन विच ही वांटेड टू प्रूव हिज थ्योरी. इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स understanding the process of life. It might also lead new ideas for preventing some type of cancers and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots of a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. वो डेवलप करना चाह रहे थे अबाउट द मोनैक प्यूपा का पर्पस क्या है, गोल्ड स्पॉट्स का पर्पस क्या है मोनैक प्यूपा पर. बट देन वो एक्सपेरिमेंट्स करते करते, वो रिसर्च करते करते उन्होंने अपने उस पर थ्योरी अबाउट लाइफ सेल्स पे डिस्कस किया एंड दैट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट एंड ऑनरेबल प्राइजेस एंड विनिंग प्राइजेस फॉर द थ्योरी ऑफ सेल्स विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज से पहले वो किसी ने नहीं की थी थ्योरी discover. Research Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not deeply that he hasn't time for other interests. Ebright also became a champion debater, public speaker, good canoeist. Canoeist कौन होते? Canoeist are the peddlers जो बोट को रो करते हैं. So he was also a very good canoeist also. He loved outdoor activities and he was also an expert photographer of nature and scientific exhibits. So he basically, his mind revolves on all the scientific things. But apart from this, we have seen that he was a champion debater, public speaker, good canoeist also. In high school, Richard Ebright was a straight A student, that is A grade student. His learning was easy, turned a lot of energy towards the debating and the model unit nations clubs. He also found someone to admire. Richard Weir is social study teacher and advisor to both clubs. Mr. Weir was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas. So Mr. Weir was the social study teacher and he just became the good guide to Ebright. Richard would always give that extra effort, Mr. Weir said. Of course, because he was a A grade student, a bright mind student, so he always put the determination first. What pleased me was his person who put in the 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. So इनका पर्सनल इंटरेस्ट बटरफ्लाइज पर था, उसके अलावा वो अपना पूरी रात 3-4 आज जग के डिबेट रिसर्च पे वर्क करते थे. दैट वाज द मोस्ट एडमायरेबल थिंग फॉर हिज सोशल साइंस टीचर. Richard was competitive also, he said, continued, but not in a bad sense. So Mr. Weir कहते हैं that वो बहुत competitive थे, but वो good sense में competition करते थे. He explained Richards wasn't interested in winning for winning's sake of prizes. He was winning because he wanted to do the best he could. So उनका जो competition था वो खुद से ही था, वो खुद से खुद को बेहतर करना चाहते थे and for the right reason he wanted to become the best person. And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Starts with the first rate mind, add curiosity, mix in the will to win the right reason. So first of all definitely उनका bright mind, then उनकी curiosity, इन सब का amalgamation करके mix होकर that became the right reason that how one can become a great scientist.
Ebright has all these qualities. From time to time, the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him. So that credit goes to his mother most importantly, जिन्होंने उनको बुक ला के दी, and The Travel of Monarch became the right platform, became the turning point of his life to become a scientist. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. So throughout his life, he was a curious child, curious by his mind, and that is how he became a real scientist. So this is all about the chapter, students. I hope you all have understood. Goodbye. Thank you.